सीतापदे राम 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 राम। श्री राम नाम संकीर्तन की जय। श्री हरे नमः श्री नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। श्रीमद भागवत பகவான் की जय। நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5ஆம் ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ணோம், 4ஆம் ஸ்கந்தம் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம், 5ஆம் ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ணலாம். 5ஆம் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் ராமநாமம். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் பஞ்சமஸ்கந்தः अथ प्रथमाध्यायः। राजोवाच प्रियवृदो भागवत आत्माराम कदम्मणे गृहे गृहे अरमतयन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः नूनं मुक्तसङ्गानं तादृशाणां च जर्षभ गृहेषु अविनिवेशो अयं पुंसां भवितुमर्हति महदां कुटुम्बविप्रशे उत्तमश्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामदिः संशयायम महान् ब्रह्मन् ताराकार सुधादिषु सक्तस्य यच्चित्तिर् अभूत् कृष्णे च मधुरच्युता। श्रीशुकोवाच भाडमुक्तं भगवतः उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्तरस आवेशित चेतस भागवत परमहंसतयित कदां किञ्चित् अन्तराय विगतां स्वां शिवदमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। यर्हि वावः राजन् स राजपुत्र प्रिय व्रत परम भागवत नारदस्य चरणौ सेवया अंजसा अवगत परम अर्थसतत्वः ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो अवनितल परिपालनाय आम्नाद प्रवर गुणगणैकान्त भाजन दया स्ववित्रोपमन्त्रितो भगवती वासुदेव एव व्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकलकारक क्रियाकलापो नैवाप्यनं तत्यत्यपि तद अप्रत्याम्नादव्यं तत् अधिकरण आत्मनान्यस्मात् असुदो अभि पराभवम् अन्वीक्षमाणः अतः भगवानादिदेव एतान्य गुणविसर्गस्य परिभ्रमण ध्यानं व्यवसितं सकल जगत्तभिप्राय आत्मयोनिर् अगिरनिगम निकच निजगण परिवेष्टितः स्वभवनात् अवतार सतत खगनतल पड़ि उडुपतिरिव विमानावलिभिर् अनुपदम् अमर परिव्रडैर् अभिपूज्यमान पदि पदि च पर्वतशः सिद्धगन्धर्वसात्य चारण मुनिगणैर् उपगीयमानो गन्धमादन द्रोणीम् अपवासन् उपससर्भ तत्र वा ये नम देवर्षि हंसयानेन पितरम भगवन्तं हिरण्यनर्भम् उपलभमाणः सहसैव उत्थाय अर्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहित अञ्जलिरुपतस्ते भगवान् अभिपारदः तत्त्वोपनीता अर्हणः सूक्तवाक्येन अधितरामुदित गुणगण अवतार सुजयं प्रिय व्रतमादि पुरुषस्तम सदयहास अवलोक इति होवाच। श्री भगवानुवाच निबोधतादेन्द्रम् अमृतं निबोधतादेतं ऋतं प्रवीमि। श्री भगवानुवाच निबोधतादेतं ऋतं ब्रवीमि वासुयितं देवम् अर्हस्य अपर्मेयम् अयं व्यवस्थित वहाम सर्वे व्यवसायस्य दिष्टम् न तस्य कश्चित् दवसा विद्यया वा न योगवेद्येन मनीषया वा नैव तदर्भिः परदस्वदो वा कृतं विह्यन्तं दानुप्रत्य विभूयात् अवायनाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदापयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगम् अव्यक्तदिष्टं जनताङ्गतत्ते यत्पाशिदन्त्यं गुणगर्भदावभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वहाम बलिमीश्वरायः प्रोदा नसीपत्विपदे चतुष्पदः येषा विशिष्टम ह्यपरन्महे अङ्गं दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्ताय तत्तत् यत् अयुक्त नादचक्षुष्मदान्तः इव नीयमाणाः मुक्ताभिः तावत् विप्रियात् स्पदेहम् आरब्धम् अश्नन् अभिमान्यशून्यः यदानुभूतं प्रदीयादमित्रः किं तन्यदेहाय गुणान् न पृङ्क्ते वयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यदस्ते षट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्महृदयम्बुधस्य गृहाश्रमकं हरत्यवत्यम न ये षट् सपत्नाः विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यदेत पूर्वम् अत्यधि दुर्कार्षित ऊर्जितारण्य क्षीणेषु कामं विचरत् विपश्चित् त्वं तब्जनावाङ्घ्रि
स्वराजकोश दुर्गार्षित निर्जित षट्सपत्नः वंशेः वहन पुरुषादितिष्ठान विमुक्त संघः प्रकृतिं प्रभजस्व शिशुगोच इति समाभिहितो महाभागवत भगवतस्त्रिभुवन उरुरणशासनमात्मनः लघुदयावणत शिरोधरो भाडमिति सुबहमानम् उवाह भगवान् अभिमानः यदावत् अवकल्पिता अवचिदिः प्रियव्रतनारदयोरम् अभिशमम अभिसमीक्षमाणयोर् आत्मसमवस्थानम् अवाङ्मनसम् स्वयम् अव्यवहृतम् प्रवर्तयन् अहमत्ते मणुरविपरेण एवं प्रतिसन्धितम् अनुरतः सुरसि वराणमदेनात्मजम् अखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तया आस्थाप्य स्वयम् अधि विषजलाशाय अपरराम इति खपावस जगतिमिवतिर् ईश्वरेच्छया अभिनिवेशित कर्म अधिकारो अखिल जगत् पंथत्वंसन पराणुपापस्य भगवतः आदिपुरुषस्य आङ्ग्री युगल अणवर्तत्याणानुपावेनः परिरन्तित कषायाशयो अवदातो अपि मानवर्तनः महदम महीतलम अनुशशास आतशः दुहितरं प्रजापतिर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतिं नाम दस्याम्बुह भाव आत्मजान् आत्मसमानशील गुणकर्म रूप वेद्यो उदारान्तस भावयं पपुप कन्यां च यवीयसिं ऊर्जस्वतिं नाम अग्नित्रेत्मजिह्वं यज्ञबाहो महावीर हिरण्यरेतो अग्नित्रोत्मजिह्व यज्ञबाहो महावीर हिरण्यरेतो कृतपृष्ठ सवण मेधादितिर्विधिहोत्र कवये इति सर्व एवाग्निनामानः ये देशं कविर्महावीरः सपण इति त्रय आसन्न उत्तरेत सस्त आत्मविद्यायाम् अर्भभावात् आरभ्य कृतपरिचयः परमहंस्य एव आश्रमम् अभजन् तस्मिन्नु हव उपसमशीलः परमश्रयः सकल जीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य वेदानाम शरणबोधस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरतं स्मरणाभिकलित परमभक्तियोगानुभावेनः परिभावितान्तर्हृतयादि गते भगवतिः सर्वेषां बोधानाम् आत्मबोधे दस्मिन् वा उपसमशीलः परमश्रेयः सकल जीव दस्मिन् वा उपसमशीलः परमश्रेयः सकल जीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य वेदनाम शरणबोधस्य श्रीमच्चरणारविन्दा अविरतं स्मरणाभिकलितं परमभक्तियोग अनुभावेन परिभाविता अंतर्हृदयादि गते भगवति सर्वेषां बोधानाम् आत्मबोधे प्रत्यगात्मनि एव आत्मनस्तथा आत्म्यम् अविशेषेण समीयुः अन्यस्यामपि जायायाम त्रयवुत्रः आसन् उत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतिः एवम् उपसमायनेषु जगतिम अर्पदन् एकादश परिवत्सराणाम् अभ्याहता अखिल पुरुषकार सार संप्रदोर्दण्ड युगल पीडितम् और्भिः पुनस्तनितपिरमित धर्म प्रतिपक्षो बहिष्मत्याश्च अनुदिनं वेदमाण प्रमद प्रसरणय औषिन्य व्रीडा प्रमोषित हासावलोक रुचिरस्पेल्यादिभिः एवं उपसमायनेषु स्वधनेश्वरः जगतिमर्पुदन् एकादशः परिवत्सराणाम् अव्याहता अखिल पुरुषकार सारसम्प्रद दोर्दण्ड युगलापीडितम् और्भिः गुणस्तनितं विरमद धर्म प्रतिपक्षो बर्हिष्मत्याश्च अनुदिनं वेदमाण प्रमोदं प्रसरण यौषिन्य व्रीड प्रमुषितं हासावलोक रुचिरस्पेल्यादिभिः पराभूयमान विवेकः इवान् अपपुद्यमान इव महामना बुभुजे यावत् अपवासयति सुरगिरिमणु परिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधादलमर्तेनैव प्रदपत्यार्तेन पाञ्चादयति तदा हि भगवत् उपासनो उपोषितादिपुरुष प्रभावस् तत् आणवितन्तन् समजपेन चदेनः ज्योतिर्मयेन रजनीम् अपि दिनं करिष्यामीति शब्दकृत्वस्तरणीम् अनुपर्यक्रामत् तृतीय पदङ्क
ये वो है तत्र चरण नेमि यद परिघातास्ते शब्द सिंधव आसन यदि कृतः शब्द द्वीपः जम्बुप्लक्ष साल्मली कुशक्रौंच साह पुष्कर संख्यास्तेषां परिमाणम् अपर्गस्मात् उत्तर उत्तर यदा संख्यम ते गुणमाण बहिः समन्ततः उपक्लुप्तः शारोदे क्षुरसोद सुरोद कृदोद क्षीरोद ततिमंडोद सुत्तोदाह शब्द जड़त यह शब्द द्वीप परिका इवाप्यंतर द्वीप समाना यह कश्यन यदान पूर्वम शब्दस्पवी बहिस्तीप बहिर्देवेषु पृथक् परिद अवकल्पितास्तेषु जम्पादिषु वर्षेष्मदि पदिर अणुप्रधानात्मजान् आत्मित्रेत्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेदकृतपुष्ट मेधातिथिविधिहोत्र संख्यान यदा संख्ये नैहिकस्मिन् एकम् एव आधिपतिम विदधे दुहितरम च ऊर्जस्पतिम नाम ओसनसे प्रायश्चित्तस्याम् आसीत् देवयानी नाम काव्यसुधा नैवं विद पुरुषकार गुरुक्रमस्य पुंसं तदङ्घ्रिरजसा यद षड्गुणानाम चित्रं विदुर विगतः सकुदा तदीत यन्नामधेय मदना स जहाधिपन्तम नैवं विदः पुरुषकार गुरुक्रमस्य पुंसं तदङ्घ्रिरजसा यद षड्गुणानाम चित्रं विदुर विगतः सकुदा तदीत यन्नामधेय मदना स जहाधिपन्तम स एवम् अपरिमित बलपराक्रम एकदा तु देवऋषि चरण अणुशयन अनुपदित गुण विसर्ग संसर्गेण अणिवृतम इमात्मानमन्यमाण आत्मनिर्भेद इदमाह अहो असात्मनिष्ठितम यत् अभिनिवेशितो अहम इंद्रियले आवित्यारचितं विषम विषय अंतकोपे ततालम अलम अमुष्यां वणिदायः विनोद मृगम मां दिग्दिगीति अर्ह्याञ्चकार परदेवता प्रसाद अधिगतात्म प्रत्यापमर्शेन अणुप्रवृत्तेभ्यः भूतेभ्यैवं यथातायं विपच्य उक्तवाहं च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिम् अपहाय स्वयं निहित निर्वेद हृदय गृहीत हरि विहार अनुभाव भगवद नारदस्य पदवीं पुनरेव अनुससार तस्य हवाये देहशुरगः प्रिय प्रतकृतं कर्म कोण कुर्यात् विनेश्वरं यो नेमिनिर्णय अहरोच्चायां क्लन् शब्दः वारिदीन् भू संस्थानं कृतं जनः सरितगिरिवनादिभिः सीमच्च बोधनिर्वृत्यै द्वीपे विभागसः ओमं दिव्यमानसं च महित्वं कर्मयोगजं यच्चक्रनिरय औवम्यं वृषाणु जनप्रियः श्री हरे नमः श्री नमः गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रत विजये प्रथम अध्यायः श्री हरे नमः श्री नमः गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम अथ तृतीय अध्यायः श्रीशुकोवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमानः अग्नित्रः जम्बुद्वीपौकसः प्रजा औरसवत् धर्म आवेक्षमाणः पर्यगोपायत् सचः कदाचित् पितृलोककामः स्वरपरपणिता मृडावलोकत्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजाम पदिम् आप्लुतं परिचर्योपकरणम् आत्मैकाक्रियेण दवस्व्यारादयां बभूव तत्प्रणप्य भगवानादिपुरुषः सतसे गायन्तिम पूर्वचित्तिमे नाम अप्सरसम अभियापयामास सा च तथा शोभवनं मदिरमणीयम विविध निबिड विडब विडगर संश्लिष्ट पुरडदा रूढस्थलं विहंगममित लेहे प्रज्यमाण ऋतुविः प्रतिपत्यमाणः सरल कुक्कुड हारण्डव खलहंसादिभिर् विचित्रम् उपकोचितामलं जलाशया कमलाकरकुमुप बभ्राम तस्याः सुललितगमनम् अदविन्यासं गतिविलासायाश्चाणुपदं कणकणायमाण रुचिरं चरणापरण स्मरणम् उपाकन्य नरदेवकुमारः समाधियोगेन अमिलित नयन नलिन युगल समाधि योगेन अमिलित नयन नलिन मुगल युगलम ईशत्तिकचय्य वसिष्ठः ताम एव अविदूरे मधुकरीमे वह सुमनसः उपचक्रन्ते में दिव्यच मनुज मनो नयन आह्लाद दुखैर कदि विहारावृडा प्रणयावलोक स्वस्वराक्षरावयवीर मनसि प्रणम कुसुमायुतस्य वेदततिं व्यवरमण निजमुख विखलितामृतासवसं हासभाषणामोदं मदान्तं मधुकर निगरोपरोधेन हृद पदविन्यासनः वल्गस्पन्दनस्तन कलशकबर भाररशनं देवीं तथावलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतः मकरध्वजस्य वसमुपनीतः जडवत्तिति होवाच हात्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्यः शैले मायासि काभि भगवत परदेवतः विज्य विवर्षि तरषि सुहृदात्मनः अत्यः किं वः मृगान् मृगेशे विपिनः प्रमत्तान् बाणाविभः भगवतः सदपत्रपात्रो
शान्तौ अभुङ्ग रुचिरव अदितिक्मदन्तौ अस्मयोंशसि मणिः विचरन्न विद्मः क्षेमायनोः जडदिगमदभः विक्रमास्तु शिष्यायमिह भगवत परित पठन्ति हि गायन्ति साम स रहस्यमजश्रमी समे यस्मचिगा विलुरिता सुमनः अभिवृष्टिः सर्वे भजन्ति ऋषिकणः युवपेदशाखः वाचं परमचरणपञ्चर तित्तिरीनाम ब्रह्मण्णरूपमुखराम शृणवाम दुभ्यम लप्त कदम्बरुचिरङ्ग बिडङ्गबिम्बे यस्यामलादपरिधि क्वचकल्कलं ते किं सम्प्रदं रचरयोत्पच शृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो बहसि यत्र दृशिता मे पंग अरुणः सुरभिरात्मपिषाण येनाशमं सपगमे सुरभिर् करोषि लोकं प्रदर्शय सुहृतमता भगमे यत्रत्यहितमुरसा वय अवो हितमुरसा अवयव आवपूर्वौ अस्मद्वितस्य मनवुन्नयनव विपत्तिः भगवत्पदं सरसरा सुधादिभक्त्रे काव आत्मवृत्तिर् अदनतः विरङ्गवादी विष्णुः कलास्य निमिषोन्महरौ च कर्णौ मत्तिक्तमेन युहलं तुज पंक्ति शोचि आसन्न भृंग निगरम सर इन्मुखं ते यो असत्वयः करसरोज हद पदङ्गुः दक्षो भ्रमण प्रमदय चयते ये चेदे अक्षिणि मे मुक्तं नदे स्मरसे वज्रखड्ज वक्र जड़ा वरोदम कष्टहानिलोह हरदिलं पड़येश नीवि मे रूपं दवोदन दवच्चरतं तवक्तम हेदत्त केन तपसा भवतो बलं तम सत्तं तव हर्कसि मया सखमित्र मह्यम किं वः प्रसीदति सभिः बहुपापनो मे न त्वं तजामि तगिदमत्वजदेव तत्त्वं यस्मिन् मनोः तृकविनो न वियाति लक्ष्णं मां चारुशङ्क्यर्कसि नेतुम् अनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवापि सशिव्यः शिशुवाच इति ललनाम् अणुनया अधिविशारदो ग्राम्य वैदक्त्यया परिभाषया तम विबुधमधिरधि सभाचया आमास सा च ततस्तस्य वीरयूधवतिर्भूतरशैलरूपभयश्री औदार्येण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुधयुधमपरिवत्सरोपलक्षणं कालम जम्बत्वेपपतिना भौमस्वर्गपोहानुबुभुजे तस्यां ऊह वा आत्मजानस राजवर आकृतः नाभिकिं पुरुष हरिवर्षैलाभृतं रम्यगहिरण्मय मुरपत्रास्पकेतुमाळ संज्ञान्नव पुत्रानजनयत् सा सुत्पदः सुधान्नव अणुवत्सरम गृह एव अपहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाचं देवम् उपदस्ते आकृत्र सदास्ते माधुर अनुग्रहात् औत्पत्तिकेनैव संहरण बलोपेदः पित्रा विभक्तः आत्मतुल्यं नामानि यदा भागम जम्बुत्वेव वर्षाणि बुभुजुः आकृत्र राजा तृप्तः कामानाम् अप्सरसम् एव अणुदिनम् अधिमन्यमाणस्तस्यः सलोकतां श्रुतिभिर अवारुन्ते यत्र पितरः मादयन्ते संवरेदे पितर्हि नवभ्रातरः मेरुदेवं प्रतिरूपाम् उग्रदं श्रीं तदां रम्यां श्यामां नारीम भद्रां देववेदीम् इति संज्ञा नवोदवहन्ने श्री हरे नमः शरण नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ तृतीयोऽध्यायः शेषगोवाच नाभरपत्यकामा अपरजयां नाभिरवध्यकामा प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषम् एव यज्ञपुरुषम् आवहित आत्मा अयजत तस्यः भावसत्यः विशुद्धभावेन यजतः प्रवक्येषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रदत्तिक् दक्षिणाविधानयोगोपत्या दुरधिगम अभिः भगवान् भागवतवात्सल्यदिगा सुप्रदिगा आत्मानम् अवराजितं निजजन अभिप्रेदात् विद्युत्सया गृहीत हृदयो हृदयङ्गमम् मनोनयनानन्दनावयवाभिरामम् आविष्कार अधः तमाविष्कृतभुजयुगलत्वयम् हिरण्मयं पुरुषविशेषम् कविश कौसेय्य अम्बरं तरमुगुरुसि श्रीवत्सवललामम् तरवरमणरुखवनमालाचूर्यं मृदं मणिगदादिभिरुपलक्षितं स्फुटकिरणप्रभरमुकुटखण्डल खडग खडिसूत्रहारकेयूरणोपर अंगभूषण विभूषितं मृत्विक् सदस्य गृहपतयो अदना इवोत्तम धनम् उपलभ्य स भगवानमर्हणेन अवनद शीर्षाण युवतस्तुः यत्पचोचुः अर्हसि मुहुर् अर्हत्तमर्हणम् अस्माकम् उपदानां नमो नमः इत्येतवत्सत्तु उपशिक्षितम् को अर्हति पुमाण प्रकृति गुण वेदिकरमति अनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयोर् अर्वाक्तनाम रूपाकृतिभिः रूपनिरूपणम् सकल जन निगायं रचन निरसन
शिवदम प्रवर गुण कणैक देश कदल आतृते परिजनानुराग विरचित सबल संसप्त सलिल सलिल सिद्ध किसलया सिद्ध किसलया तुलसिका दुर्वांकुरे अभिसंप्रतिया सवर्यया किल परम परिदुष्यसि अदान यामी न भवतः इच्छयोरुभारवर्य समोचितम् अर्थं विहोबलवामहे आत्मन एव अनुसपनम् अंजसा व्यतिरेकेन भोवयमान शेष पुरुष अर्थस्वरूपस्य किन्तु नादाशिषः आशासानानाम एतत् अभिसंराधन मात्रम भवितुमर्हति तत्यदा बालिशानाम स्वयं आत्मनः सयः परम विदुषाम परम परम पुरुष प्रकर्षकरणया स्वमहिमानम च आववर्खाख्यं उपकल्पयिष्यन् स्वयं नापचितः एवेतरवत् इहोपलक्षतः आदायम् एव वरो अर्घतमयर्घ्यवर्षित राजर्षि वरदर्शभो भगवान् निज पुरुषेक्षण विषय आसीत् आसङ्गनिस्सुतज्ञानानल विदुदाशेष मलानम भवत् स्वभावानम आत्मरामणम मुनिनम अवपर मुनिनाम अणवरद परिगुणित गुणगणः परम मंगलायन गुणगण कथनो असि अद कथन चित्तक्षण श्रुतपदन चुंबन द्रवस्थानादिषु व्यवसानं न स्मरणाय ज्वरमरण दशायमपि सकल कष्मल निरसनानि दव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु अद कथन चित्तक्षण श्रुतपदन चुंबन द्रवस्थानादिषु व्यवसानं न स्मरणाय ज्वरमरण दशायमपि सकल कष्मल निरसनानि दव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु अद कथन चित्तक्षण श्रुतपदन चुंबन द्रवस्थानादिषु व्यवसानं न स्मरणाय ज्वरमरण दशायमपि सकल कष्मल निरसनानि दव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु किंचायं राजर्षि अवत्य कामः प्रजां भवादृषि आशासान ईश्वरमाशिषाम स्वर्ग अभवर्कयोरपि भवन्तम उपतापति प्रजायाम् अर्थप्रत्ययोः धनदं यवातनः बलीकरणं कोपायते अपराजितया मायया अणवसित पदव्याणावृतं मदिर विषय विषया अणावृतं प्रकृति अनुपासितम् अहच्चरण यदुहभावद्व पुनरतप्रकर्तरिह समाहुतस्तत्रात्तदियाम मन्तणम नस्तत्यद्देवहेरणम देवदेवार्कसि साम्येन सर्वान् प्रतिवोढुम् अभिदुषाम शिशुगोच इति निगतेन अभिष्टूयमानो भगवान् अग्निविशर्षभो वर्षतराभिवादिनाभि वन्तिते चरणः सदयमिदमाह शिवाणुवाच अहो पदाहं ऋषयो भवद्भिरभिदधिकीर्भिर्वरम् असुलभम् अभियाचितो यदमर्ष्यात्मजो यमया सतुषो भूयादिधे ममाहम् एव अभिरूपः कैवल्या तथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखं यत् त्यजदेव कुलम् ततः आग्नित्रेय हंसकलयः अवतरिष्याम् आत्मतुल्यम् अनुपलभमानः शिशुगोच इति निशामयन्त्याम् शिशुगोच इति निशामयन्त्यमेरुदेव्यः पदिम् अभिधायान्तर्तते भगवान् बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमऋषिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकित्सयः तत्तवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मं दर्शयितुं कामो वातरषणानाम श्रवणानाम ऋषीणाम उत्तमन्त्रिणाम शुक्लया धनुभावदतार श्री हरि नमः श्री नमः गोपिकार्चन स्मरण गोविंद गोविंद अथ चतुर्थाध्यायः श्रीशुकोवाच अधः तमुत्पत्त्यैव अविव्यज्यमानं बहवलक्षणं संयोग समवैराग्य ऐश्वर्य महाविभूतिभिः अनुदिनमेधमाण आनुभावं प्रकृतिः प्रजः ब्राह्मणः देवतश्च आवणितलं समवनाय अधितराम जकृतः तस्य वा इत्तमवर्ष्मणः पर्यसः प्रकर्षोकेन च ओजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याप्यमं च पितः ऋषभ इदीतम नाम चकार तस्य इन्द्रः स्पत्तमानः भगवान् वर्षे न बवर्ष तत्तावदाद्यः भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वर प्रहस्त्य आत्मयोगमाय्यः स्ववर्षमजनाभं नामप्यवर्षत् नाभिस्तु यदा अभिलषितम् सुप्रजस्त्वम् अवरुत्या अधि प्रमोदवर विक्फलो कत्कदाक्षर्यः गिरास्वैरम गृहीत नरलोक सधर्मम भगवन्तम पुराणपुरुषम माया विलसितं मदिर्वत्स दादेति सानुरागमुपलाडयन् परं निवृत्तिम् उपगतः
विदितानुरागम आबौर प्रकृति जनपद राजः नाभिरात्मजम समय से रक्षायाम अभिषिच्य ब्राह्मणेषु पुनिताय सह मेरुदेव्या विशालाय प्रसन्न निर्गुणेन तपसा समाधि योगेन नरनारायणाख्यम भगवन्तं वासुदेवम् उवासिनः कालेन तन्महिमानम् अवाप यस्यः पाण्डवेय श्लोका उदाहरन्ति कोण तत्कर्म राजर्षे नाभिर् अन्वाचरेत् उमान अवत्यताम् आहत्यस्य हरिः सत्येन कर्मणा ब्रह्मण्य अन्ये कुतो नाभिर्विप्रः मङ्गलपूजितः यस्य बर्हिषि यज्ञस्यं दर्शयामासु रोजसा अतः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमानः प्रदर्शितं गुरुकुलवासो लप्तवरैर्गुरुभिर् अनुज्ञातो गृहमेदिनम धर्मान् अनुशिक्षमाणो जयन्त्याम् इन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समम्नाय आम्नादम् अभियुञ्चन् आत्मजानाम् आत्मसमानम् सदं जनयामास येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठश्रेष्ठगुण आसीत् यनिदम वयं वर्षम् आसीत् यनिदम वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति तमण कुशावर्त इलावर्त ब्रह्मावर्त मलय केन्द्र पत्रसेन इंद्रस्पृक् विदर्पः कीकडेदि नव नवदि प्रतानः कविर्हरिरन्तरिक्ष प्रपुत्तः पिप्पलायनः हाविर्होत्रादः त्रिमिरचमस हरभाजनः इति भागवत धर्मदर्शन नभः महाभागवतस्तेषां सचरितं भगवन् महिमोपप्रमिदं वसुदेव नारद संवादम् उपसमायनम् उपरिष्टात् वर्णयिष्यामः यवियांस एकाशिति जायन्ते यः पितुरादेशकराः महासारण महाश्रोत्रिय यज्ञशीलः कर्म विशुद्ध ब्राह्मण बभूवुः भगवान् ऋषभ संज्ञा आत्मदंड स्वयं नित्य निवृत्त अनंत परंपराः केवल आनंद अनुभव ईश्वर एवः विपरीतवत् कर्मान् यारभमाणः कालेन अनुगतं धर्ममाचरणेन उपशिक्षयन् अदत्विदं सम उपशान्तो मैत्रकारणिको धर्मार्थयश प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत् यच्चिष्यन्याचरितं तत्तत् अनुवर्तते लोकः यच्चभिस्पविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं प्रगुह्यं ब्राह्मणे दर्शितं मार्गेण सामादिभिरुपयैर जनदम अनुशशास द्रव्यदेशकालवयः शतत्विक् विविधोत्तेषु उपचितिः सर्वैरभिः कृतिभिर्य यथोपदेशं सदकृत्पहियाचः भागवदर्शवेन परिरक्ष्यमाण यदस्मिन् वर्षेण कश्चन पुरुषः वाञ्छित्य अविद्यमानम् एव आत्मनः अन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचित्त अपेक्षते भर्तुर्यनुसवणं विजृम्भितस्नेह अतिशयम् अन्तरेण स कदाचित् अडमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तकतो ब्रह्मर्षि प्रबलसभायां प्रजानम दिशामयन्तीनाम् आत्मजान् अवहितात्मनः प्रशय प्रणयं परसयन्त्रितान् आप्युपशिक्षयन् निधि होवाच श्री हरे नमः शरणं गोविका जमस्मरण गोविंद गोविंद अद पंचमाध्यायः अरिम्याण ऋषभदेवुडे उपदेशं अडे पडियलाम अद पंचमाध्यायः ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान् कामान् नार्हते वित्पुजां ये दभो दिव्यं पुत्रः येन सत्वं सुत्यत्यस्मत् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तं महत्सेवां द्वारम् आहुः विमुक्तेः तमद्वारं योषितां संगिसंगं महान्दस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये एवमयेष कृत सौहृदात्ता जनेषु देहाम्बरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मज राजमत्सु न प्रीतियुक्त यावदत्तस्य लोके नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यतेन्द्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यदा आत्मनो अयन् असन्नपि क्लेशदा आसदेहः पराभवस्तावतबोधजातः यावन्न जिज्ञासदा आत्मतत्त्वं यावक्रियास्तावदिदं मनोवैः कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनकर्मवशं प्रयुक्त अविद्यया आत्मन्योपदीयमाणे प्रेरिण यावन्मय वासुदेवेन मुच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यत्ययदा गुणेहमास्मात्य प्रमत्त सहसा विपश्चित् अधस्मृतिर्विन्तति तत्र तापन असत्यमैदुर्यमहारमज्ञः वंशस्तु यामितनिभावमेदम दयोर्मितो हृदयक्षन्तिमाहुः अदो गृहक्षेत्र शताब्दवित्तैर्जनस्तमहो अयमहम् अदो गृहक्षेत्र शताब्दवित्तैर्जनस्य मोह अयमहं ममेदे यदा मनोहृदयक्षन्तिरस्त्यं कर्माणुबद्धो दृढ आश्रदेत तथा जन संपरिवर्तते अस्मात् मुक्त परमज्ञात्याधिहाय हेतुम् हंसे गुरु मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया त्वं तदीक्षया च तस्पत्र जन्तुर्भस्नावकत्या जिज्ञासया तपसे हा अनिवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च
सर्वत्र जंतुर्व्यसनावकत्या जिज्ञासया तपसे हानि प्रत्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं मद्देव संकाते गुणकीर्तनान् में निर्वैर साम्योप समेन पुत्रा जिहासया देह के आत्मबुद्धेः आध्यात्म योगेन विवेक सेवया प्राणेन्द्रियात्मा जयेन सत्रियके सत्सत्सया ब्रह्मचर्येण शश्वता संप्रमादेन यमेन वाचाम सर्वत्र बद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन तुत्युत्तम सत्वयुक्तो लिंगम व्यवोहेत कुशल अहमख्यम हर्माशयम हृदय क्रंति बंधमाभित मत्तः यदोपदेशम सम्यक् व्यवोह्यो परमेद योगात् वत्रं सशिष्यां च बहुकुरुर्वः मल्लोह काम मदनुग्रहातः इत्थं विमन्यराणशिष्या तदज्ञान न योजयत कर्मसु कर्म मूढान कम योजयन् मनुजो अर्थम लभेदः निपातयन्नाष्टदशम हि कर्ते लोग स्वयं श्रेयसे नष्टदृष्टिर्यो अर्थान समीहेद निकाम कामः अन्योन्य वैरः सुफले स हेतुर् अनंत दुःखं क्षणवेद मूढः कस्तं स्वयं तथा विज्ञ विपस्थित अविद्यया मन्दरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तम सकुणः सकुणः कुपतिमं प्रयोजयत् उत्पदगम यदान्तम कुल न सस्यात् स्वजन न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैव न दस्यान्न पदिश्च सस्यान्न मोचयत्यः समवेद मृत्युम इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे हि यत्र धर्म आरत अधो हि मां वृषभं प्राहुराज्यः तस्मात् भवन्तु हृदयेन जातः सर्वे महीयांसम् अमुम अनापम अकृष्टबुद्ध्या भरदं भजत्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानम बोधेश विरुत्य विदुत्तम यः सर्वेषु वास्तेषु सबोधनिष्ठः ततो मनुष्यः प्रमदास्ततो अभि गन्धर्वसिद्ध विबुधानकाये देवासुरेभ्यो महवत्प्रधानः दक्षातयो ब्रह्मसुधास्तु देशां भव परस्वाद विरिञ्च विरिः समत् परो अहं त्यजदेव देवः न ब्राह्मणस्थलीय बोधमन्यत् पश्यामि प्रहाकिमद परं तु यस्मिन् ऋभि प्रहृदं श्रद्धयाहम् अस्नामि कामं न तदाग्निहोत्रे तदा धनुर्वसति मे पुराणी येन हि सत्त्वं परमं पवित्रं समोतम सत्यमनुग्रहश्च तपस्य दीक्षानुपपश्च यत्र मत्वाप्यानन्दात् परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतिर्न किञ्चित् येषां किमु स्यादितरेण तेषाम् अकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजं सर्वाणि मध्यष्टिमतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुधात्रुवाणि सभाविदव्यानि पदे पदे व्यक्तदग्भिः तदुदाहरणं ये मे मनोवशत्रकरणे हि तस्य साक्षात्कृतं मे परिवर्षणं हि विनापमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपाशान्न विमोक्तुमीशेत् शिशुवाच एवम् अनुशास्यात्मजान् स्वयम् अणशिष्टानपि लोकान् अनुशासनात्म महान् पावः परमसुहृत् भगवान् ऋषभावदेश उपसमशीलानाम् अपरदकर्मणां महामरणं भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्य धर्मम् उपशिक्षमाणः तनय सतज्येष्ठम परम भागवतं भगवज्जन परायणं भरतम तरणि वारणाय अभिषिच्य स्वयं भवन एवरवरितं शरीरमात्र परिग्रहवन्मत्त इव ककणपरितानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपितः हवनीयो ब्रह्मपत्रप्रभुराज जडान्तमोघपतिरे पिशाचोन्मादकवत्तावतूत वेशः अभिपाष्यमाणो अपि जनानाम गृहीतमौनप्रतस्तूष्णीं बभूव तत्र परग्रामाकरकेड बाडकर्बड शिविरव्रजकोशं सात् गिरिवनाश्रमादिषु अनुपदम अवनीचरापसतिः परिपूयमाणः मक्षिकापिरिव वनगर्जस्तडन दाडन अवमेहन स्टीवनं ग्रावसकृतरज प्रक्षेप बोधिपाद दुरुक्तैस्तत् अभिगणयन्येवासत् संस्थानम् एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश उभया अनुभव स्वरूपिणः स्वमहिमावस्थानेन असमारोपित अहममाभिमानात् अविखण्डितमनः पृथिवीं एकचर बलिवप्राम आदिकुसुमाकरचरणोरस्थल विपुल पाकवंशकलबदना अवयव विन्यासः प्रकृतिसुन्दर स्वभावहास सुमुखो नवनलिन दलाय मानशिशिर दारा अरुणायद नयन रुचिर सदृश सबग कपोल कर्ण खण्डनासो विगुडस्मित वदन महोत्सवेन पुरवणितानां मनसि कुसुमा सरासनम् उपददान परागबलम्ब माणकुडिल जडिल कविशकेश भूरिभारो अपतूत मलिन निज शरीरेण गृहीर इवा दृश्यते यर्हि भावस भगवान् लोकमिमं योगस्यात्ता प्रदीपम् इवा चक्षणस्य तत्र प्रतिक्रियाकर्म बीभत्सिदम् इति
यदम आचकरमास्थितः सयनः यवास्नादिः पिबति खादत्यपमे हदति स्म चेष्टमाणमुच्चरितः अधिक्तोत्तरशः तस्यः यः यः पुरुषस्वरूपी सौगन्त्यवायस्तं देशं दशयोजनं समन्तात् सर्वं चकार एवं कोमृगकागचजिला रजश्रेष्ठनासिनः शयनः कागमृगकोचरितः पिबतिः खादत्यपमे हदति स्म इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपदिर् वृषभ आविर्द परम महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां बोधानाम् आत्मबोधे भगवती वासुदेवे आत्मनो अव्यवधान आनंद आरोदर अव्यवधान आनंदरोदर पाविनः सिद्ध समस्तात् परिपूर्ण योगेश्वर्याणि वैखायस मनोजपान्तर्तान परगाय प्रवेश दूरग्रहणादीनि यतोच्योपकदानि अंजसा हृदय नाप्यानंदत् श्री हरिनव शर्म शरण गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद आदषष्टोऽध्यायः आदिवाच ननु नम भगव आत्मरामणम योग समीरित ज्ञानापवर्जित कर्म बीजानम ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यतोच्योपकदानि श्रीवाच सत्यमुक्तं किन्तु ह्यवाग्येन मनसः अत्त दर्शम्ब मनवस्थानस्य षड्गिराद इव संगच्छन्ते तदा चोक्तम् न कुर्यात् कस्यचित् सख्यं मनसि स्यानपस्थितः यत्र शम्भाचराचरणं चस्कन्ददव ऐश्वरम नित्यं तथाधिकामस्य चित्रं तमणगे आर्यः योगिन कृतमैतस्य पत्युर्जायव पुंसले कामः मन्दिर्मदोर्वभः सोगमोह पयातयः कर्मबन्धश्च जन्मनः स्वीकुर्यात् कोण तद्बुधः आदिवम् अखिललोकपालललाम विलक्षण जडवत् अवतूत वेश भाषा चरितरे अभिलक्षित भगवत् प्रभावयोगिनम सांबराय विधिम अणुशिक्षयन् स्वकलेमरम जिहासुर आत्मन्यात्मानम् असंव्यवहितं अणतांतर भावेन अन्वीक्षमाण उपरदान प्रत्युपरराम तस्यः वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवदा ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमं जगतिम अभिमानाभासेन संक्रममाणः कोङ्गवेङ्ग कुडगान् दक्षिण कर्नाटकान् देशान् यदृच्छोपगतः कुडगाचलोपवन आस्यकृत आस्मकपल उन्माद इव मुक्तमुत्तज असंपीत एव विचचार अध समीर वेगा विदूत वेणु विकर्षण जादो दावानलस्तत् अणमालिलिहान सहतेन तदाह यस्य किलान चरितमुपागर्य कोङ्गवेङ्ग कुडगानम राजर्हान् नाम उपशिक्ष्य कलापधर्म उत्कृष्यमाणे विविधव्येन विमोहितः स्वधर्म पदम् अहुदोभयम् अवहाय कुमुदपाखण्डमसमञ्जसम निजः मनीषयः मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते येन वापखलः मनुजापसता देवमाया मोहितः स्वविधि नियोग शौच चारित्रविहीना देवहेरणान्य अवप्रतानि निज निजचया कृष्णानः अस्नान आचमना अनाचमना शौच केशवलंचनादीनि करुणा अधर्म बहुलेन उपहद दियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञपुरुष लोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति देशः ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रया अन्धपरमरया आस्वस्तास्तमस्यन्ते स्वयमेव प्रपदिष्यन्ति अयम् अवतारो रजसो वप्लुतं कैवल्योपशिक्षणार्थः तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो वः शब्द समुद्रवत्यः द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेदत्ते गायन्ति यत्र त्यजनः मुरारेः कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति अहो न वंशः यस्यावतातः प्रयव्रतत्यत्र पुमान् पुराणः कथापदारः प्रशसात्यश्चचार धर्मं यथाहर्महेतुं कोन्वस्य काष्ठम् अपरः अनुगच्छन् मनोरथेन अप्याभवस्य योगी यो योगमायः स्पृहयत्योदस्तात् असत्तज्ञानेन कृतप्रयत्नः इति सकल वेदलोकदेव ब्राह्मण खवाम परम गुरुर्भगवतः ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितं गीरितं पुंसम समस्तदुच्चरित अभिहरणम परम महामंगलाय नम इदम् अनुशतयो उपचितय अनुशृणोत्याश्रापयति वावहितो भगवती तस्मिन् वासुदेवे एकान्तद भक्तिरणयोरभिः समण वर्तते यस्याम् एव कवयः आत्मानम् अभिरतम विविध विरजन संसार बलिदावोपदप्यमानम्
अणुसवणम स्नापयन्तस्तयैव परया निवृत्त्यः ह्यपवर्गम् आत्यन्तिकम् परमपुरुषार्थम् अभे स्वयं आसादितम् परमपुरुषार्थम् अभे स्वयं आसादितम् यवात्रियन्ते भगवद्दीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थः राजन् परिकुरुरलम भवतां यतो नाम दैवं प्रियः कुलपतिः क्वचकिं करोपः अष्टैव मंग भगवान भजतां मुखन्तं मुक्तिं तदाधिकर्षित स्मरण भक्ति योगम राजन् परिकुरुरलम भवतां यतो नाम दैवं प्रियः कुलपतिः क्वचकिं करोपः अष्टैव मंग भगवान भजतां मुखन्तं मुक्तिं तदाधिकर्षित स्मरण भक्ति योगम नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त दृष्टः श्रेयस्य तत्र शनया चिरसुप्तबुद्धिः लोकस्य यः करुणया अभयम् आत्मलोकम् आख्यानमो भगवते पुरुषाय तस्मै आख्यानमो भगवते पुरुषवाय पुरुषाय नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त दृष्टः श्रेयस्य तत्र शनया चिरसुप्तबुद्धिः लोकस्य यः करुणया अभयम् आत्मलोकम् आख्यानमो भगवते पुरुषवाय तस्मै आख्यानमो भगवते पुरुषवाय तस्मै श्री हरे नमः श्री नमः नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त दृष्टः श्रेयस्य तत्र शनया चिरसुप्तबुद्धिः लोकस्य यः करुणया अभयम् आत्मलोकम् आख्यानमो भगवते पुरुषवाय तस्मै नमः श्री हरे नमः शर्म गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद அடுத்தது பரதயோக சரித்திரம் அருமையான சரித்திரம் பார்க்கலாம் அது சப்தமோத்தியாயः श्रीशुवाच वरदस्तु महाभागवत यदा भगवदा अवनिदल परिपालनाय सञ्चिन्तितस्तदनुशासनः परः पञ्चजने विश्वरूपं तु हितरमुपयेमे तस्यामः आत्मजानकास्येन अनुरूपाणात्मनः पञ्चजनयामास भूतातिरिव बोधसूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रप्रथम सुदर्शनमाभरणं सुधूम्रकेतमिति अजनाभं नावेदत्वर्षं भारतमिति यदा आरोप्य व्यपदिशन्ति स बहविन् महीपतिः पितृपितामहवत् उर्वत्सरतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानः प्रजः स्वधर्मम् अनुवर्तमानः पर्यवालयत् ये च भगवन्तं व्यक्तिकर्तरूपं कृतिभिरुच्चावचहे श्रद्धया आहृदाग्निहोत्र दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानं प्रकृतिविकृतिभिरनुसवनं चातुर्होत्रविधिना चं प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिता अङ्ग्रियेषु अपूर्वं यत् क्रियाबलं धर्माख्यम् परे ब्रह्मण्यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गाणां मन्त्राणाम् अर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायां भगवति वासुदेव एव भावयमान आत्मनैपुण्यं मृदितकषाय हविषु अत्वज्जीविर्गृह्यमाणेषु स यजमानः यज्ञवाजो देवांस्थानपुरुष अवयवेषु अप्यध्यायेत् एवं कर्मविशुद्ध्या विशुद्ध सत्त्वस्य अन्तर्हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेव महापुरुषो लोभोपलक्षणे श्रीवत्सकौस्तुभ वनमाला हरितरा कथादिभिरुपलक्षिते यजपुरुष हृल्लिखितेन आत्मनि पुरुषरूपेण विरोच्यमाण उच्चस्तरां भक्तिम् अनुदिनमेधमाण रया चायते एवं वर्षायित सहस्र पर्यन्तावसितं कर्म निर्वाणावसरो अधिपुज्यमानम् स्वतनयप्ति रक्तं पितृवैतामहं यथाताय विभज्य स्वयं सकल संपन्निखेतत्व फलहाश्रमं परोपराज्य यत्र भगवान् हरिरत्यावि तत्र ध्यानम् निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छारूपेण यत्राश्रम पदान्योपयतो नाभिर्दशचक्रनदी नाम सरिप्रबल सर्वदा पवित्रीकरोति तस्मिन् भावे किलस सकल तस्मिन् भावे किलस एकलः फलहाश्रमोपवने तस्मिन् भावे किलस एकलः फलहाश्रमोपवने विविध कुसुमकसलय तुलसिकाम्बुभिः कन्दमूल बलोपहारश्च समीक्षमाणो भगवद आराधनं विविक्त उपरद विषयाभिलाषोपप्रदोपशमः परां निर्दिमवाप उपरद विषयाभिलाषोपप्रदोपशमः परां निर्वृतिमवाप तयत्तिम् अविरत पुरुषपरिचर्यया भगवति प्रवर्तमान अनुरागं परत्रहृदय शैथिल्यः प्रहर्षवेगेन आत्मनि उद्विद्यमान रोमफलककुलग आत्मन्य प्रवृत्त प्रणय बाष्पनिवृत्त अवलोकनयन एवं निजरमण अरुण शरणरविन्द अनुध्यानं परिचितं भक्तियोगेन परिप्लुतं परमाह्लाद गम्भीर हृदय हृदावकाढदर्शनस्तामपि क्रियमाणं भगवत् सवद्यं न सस्मार इत्थं तद् भगवत् प्रत ऐनय अजनवासस अणुसवण अभिषेकात्रम अभिषकोडिल जडाकलापेन च विरोचमाण सूर्यच्चाम भगवन्त हिरण्मयं सूर्यश्च भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहानि सूर्यमण्डले अप्युपदिष्टन्नेदु होवाच वरोरज सवितुर्जात वेद देवस्य वर्गमणसितं चचान सूर्यदसादः स्मरणाविश्य चष्टे हंसं दृशत्रिङ्गिरामिमः श्री हरे नमः शरण नमः गोपिकार्जुन स्मरणं गोविन्द गोविन्द अदाष्टमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच एकददु महानत्यम कदा अभिषेके
कृताभिषेक नयमिकावश्यको कृताभिषेक नयमिकावश्यको ब्रह्मक्षराभिकृणानो मुहूर्तत्रयम् उदगात् उपविवेश तत्र तथा राजन् हरिः विवासया जलाशयाभ्यासं एकैव उपजगाम तयापि विद्यमानः वदके तावदेव विदुरेण नन्दुहमृगपदेरुन्नादो लोकभयङ्करबुधपदत् तम् उपसत्य प्रकृतिविक्लवा क्षण सुतराम् अभि हरिभयाभिनिवेश व्यक्रहृदया पारिप्लव दृष्टिरहदत्रश भयात् सकसैवोच्चक्राम तस्यावत्पतन्त्या अन्तर्वत्या उर्भया अवगलितो योनिर्गतः गर्भः स्वदस्य निपपाद तत्प्रसवोत्सर्पणं भयगेदादुरा स्पकनेन विजिज्यमाण कास्यचिद्दद्यम कृष्ण सारसति निपपादात् च ममार त्वं तेन गुणं कृपणम स्वदसानुह्यमाणम् अभिवीक्ष्याभिवित्तम बन्धुरिवाणकम्बया राजेश्वरद आदायः मृतमातरम् इत्याश्रमपदम् अणयत् तस्य वा येन गुणक उच्चरे तस्मिन् कथनिच अभिमानस्य आहरः तद्भूषण पालन लालन प्रेरण अनुद्यानेन आत्मनि यम सह यमः पुरुषपरिचर्यादिया एकैकशः कतिपयेन आहर्कनेन वियुज्यमाण किल सर्व एवोदवसन् अहोपदायं हरणगुणकः कृपणः ईश्वरचरण परिभ्रमण कृपण ईश्वररथ चरण परिभ्रमण रयेन स्वगण सुहृत् बन्धुभ्य परिवर्जित शरणं च मोपसादितो मामेव माता पितृव प्रातज्ञादिन प्रातज्ञादिन यौदिकांश्चैव उपेयाय नान्यं कञ्चन वेदः मया अधिविश्रप्तश्चाद् एव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रेरण लायन मानसूयन अनुष्ठेयं शरण्योपेक्षदोषविदुषा नूनं चार्यः साधवः कुसुमशीलः कृपण सुहृत् एवं विधात्ते स्वार्थानपि उदतरानुपेक्षन्ते यदि कृतानुषङ्गे आसनसेनाडनस्थान आसनादिषु सह मृगजहुन स्नेहानुपत्रहृदया आसीत् कुसुकुसुम समेत पलास फल मूलाधकान्य आहरिष्यमाणो मृगशाला वृकादिप्यो वयम् आशंसमाणः यथा सह हरिणकुणकेन वनम समाविशति पादिशचः मुक्तभावेन तत्र विषक्तम् अधिप्रणय वरहृदय कार्पण्यात् स्कन्देन त्वहति एवं उत्सङ्गवरसि चातयो उपलालयन् मुदम परमम् अवप क्रियायां निर्पत्यमाणायाम् अन्तराले अभ्युत्थाय उत्थाय यदि नम अभिषक्षेद दर्शिभावस वर्षपतिः प्रकृतिस्तेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्तिस्तात् स्वत्सदे सर्वदीति अन्यथा वृषमुत्पिक्नमनः नक्षत्रविण इव कृपणकरणमधिरदर्शनेन हरिणकुणकविरह विह्वलहृदय सन्तापस्तमेव अनुशोचन किलः कष्मलम् महतविलम्बित हिदि होवाच अभिपतस वैः कृपणः येन पालको मृदहरिणी सुतो अहो अमानार्यस्य षड्गिरातमधिर अकृत सुकृतस्य कृत यशम्ब आत्मप्रत्ययेन तत्तविगणयन् सजन इवागमिष्यति अभिक्षेमेण अस्मिन् आश्रमो भुवने शष्मणिः चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि अभिचन्नमृगः शालामृगः अन्यदमो वा नैकचर एकचर वा भक्षयति निम्लोचति ह भगवान् सकल जगत् क्षेमोदयस्त्रयी आत्मात्यापि मम नः मृगपदन्यास आगच्छति अभिस्मृतकृत सुकृतमागत्य मम सुखयिष्यति हरिणराजकुमारः विविधरुचिर दर्शनीय निजवर्गं तारक विनोदरि असन्तोषं स्वाणाम् अवनुदन् श्वेलिकायां वृषः समाधिना आमीलितदृशं प्रेम संभ्रमेण चकित आगत्य पृषद वशानक्रेण लुडति आसादित हविषि वर्षिषि दूषिते मयो बालप्तो वेदवेदः सबत्युवरदरास ऋषिकुमारवत्त अपहित करणकलाप आस्ते करणकलाप आस्ते किंबा अरे आचरितम तपस्तपस्विन्याणयां यदि यम अवनिः सवणय कृष्णसार दनय दणद असुभ किंबा अरे आचरितम तपस्तपस्विन्याणयां यदि यम अवनि सवणय कृष्णसार दनय दणुदर सुभगम शिवदम खर कुर पद पंक्ति द्रविण विदुरादुरस्य कृपणस्य मम द्रविण पदवीं शोचयन्त्यात्मनः च सर्वतः कौतुकमत्वचनम स्वर्गापवर्ग कामनम देवयजनं करोति अभिसुत्तासो भगवान् उडुपतिरे नम मृगपतिर्भयान मृदमातरम
मृगपालकम स्वासम परिपृष्टमनुकंपयः कृपणजनवत्सलः परिपादि किं वा आत्मज विश्लेषज्वरं दवदहनसिगाभिरूपदप्यमाण हृदयस्थल नलिनीकम मामुपश्रुतं मृगीतनयम शिशिर शान्तानुरागगुणितं निजवदन सरलामृतं मय कपस्तिभिः स्वदीयदीति च एव अहडमानमनोरथाकुलहृदयो मृगधारक आवासेन स्वारुक्तकर्मणा योहरंबड़दो विक्रंसितः स योगदापसो भगवदाराधनलक्षणास्ति कथमितरतजात्यन्तर्येण कुणकासङ्ग साक्षनिश्चय स प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्त दुस्तच हृदय अभिजातस्य तस्यैवम् अन्तराय विहदयोहारम्भणस्य राजर्षिर्भरतस्य रावणमृगार्पकभूषणपालन प्रेरणलालनानुसङ्ख्येन अभिगणयत आत्मानं पालन प्रेरणलालनानुसङ्ख्येन अभिगणयत आत्मानम् अहिरिवाहुबिलम दुरतिक्रमः करालरभस आवत्यत तदानीमपि पार्श्ववर्तिनम् आत्मजमिवाणुस्वसिन्तम् अभिवीक्षमाण मृग एव अभिनिवेशितमना लोकमिमम सह मृगेन कलेवरं मृतमनः मृतजन्म अनुस्मृति इदरवन्न मृगशरीरम् अवाप तत्राभिह आत्मनो मृगत्वकारणं भगवदाराधन समीहानुभवेन अनुस्मृत्य रसम् अनुतप्यमानः आह अहो कष्टं पृष्टो अहम् आत्मवदम् अणुपदाति यत् समस्त संघस्य विविक्त पुण्यारण्य शरणस्य आत्मवदः आत्मनिमे सर्वेषाम् आत्मनाम भगवतिः वासुदेव तदनु श्रवणमरण संकीर्तनाराधनानुस्मरणाभियोगेन असन्य सकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कात्स्येन मनस्तत्तु ममापोदस्य आरण्य मृगसुतमनु मृगसुतमनु परिशुश्राव इत्येव निकट निर्वेदकस्वच्छ मृगिम मातरम पुनर्भगवत् क्षेत्रम् उपसमशील मणिकणदगितम सालक्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालञ्जरात् प्रत्याजगाम तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः स्वसङ्गश्च वृषम् उद्विग्न आत्मसहचरः शुष्कवर्ण प्रणविरुद्धः वर्तमानः मृगत्वनिमित्त अवसानमेव कणयन मृगशरीरम् तीर्थोदकक्लिन्नमुत्ससर्ज श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदनवमोऽध्यायः श्रीशुगोच अदकस्य चित्तत्वरस्य आङ्गिरपर्वस्य समदमदवस्वाध्याय अध्ययनत्यागसन्तोष तितिक्षा प्रश्रयं विद्यानुसूय आत्मज्ञानानन्तयुक्त तितिक्षा प्रश्रय विद्या अनुसूय आत्मज्ञानानन्तयुक्त स्यात्म सदृशुतशीलाचार ध्रुवौताद्यगुण नवसोदर्य अङ्गज भवोर्वेदनमच्च यभियस्याम वाद्यायाम यस्तु तत्र ममस्तम परम भागवत राजस्य प्रबलम भरतम स्पष्ट मृग शरीरम तत्सर्व शरीरेण विपुलत्वं गतमाहुः तत्रावेस्पजनसङ्गाश्च पुरुषं विद्विजमानो भगवत कर्मबन्ध विद्वंसन श्रवणस्मरण गुणविवरण चरणारविन्दयुगलं मनसा विदुततात्मनः तदिघातम् आसङ्गमानो भगवत अनुग्रहेण अनुस्मृत स्पूर्वजन्मावलि आत्मानम् उन्मत्तं जडान्तबधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य तस्याभिहवा आत्मजस्य प्रहपुत्रस्नेहानुबद्धमना समावर्तनात् संस्कारान् यदोपदेशं यदुतानम् उपनीतस्य च पुनः शौच आचमनादीन् कर्मः नियमान् अणुविप्रधानभिः समशिक्षयत् अणुशिष्टेन हि भाव्यं पितृपुत्रेण यदि स चाभिहितः तत्तु पितृसन्निधाप्येव सन्निधाप्येव सदृचीनमिव स्म करोति छन्दांस्यात्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः स प्रणव शिरस्त्रिपदिं सावित्रीं ग्रीष्मवासन्तिकानं मासान् अधीयानम् अभ्यासमवेदरूपं प्रहयामास ग्रीष्मवासन्तिकान् मासान् अधीयानम् अभि असमवेदरूपं ग्रहयामास एवं स्वतनुज आत्मनि अनुरागापेक्षित चित्त शौच अध्ययन व्रतनियम कुर्बाणल शुश्रूषणा औपकुर्बाणक कर्मान् अणभियुक्तान्यपि समणशिष्टेन भाव्यम् इत्यसदाग्रहः पत्रमनुशास्त्यं स्वयं तावत् अनधिकतमनोरथः कालेन अप्रमत्तेनः स्वयं गृह एवः प्रमत्तः उपसंहृतः अधिकवीयसी प्रजसदिः स्वगर्भं जातमवितनम सवत्यः उपन्यस्यः स्वयम् अणुसंस्थया पदिलोकमहात् इदरिवरदे प्रातः येन मदत् प्रभावविदस्त्रय्यां विद्यायां ये पद्यवसितम् अदयो
न परविद्यायां जडमतिरितिः प्रादुरनुशासनं निर्बन्धन्यवर्तन्ते सचः प्राकृतिर् त्रिपदवसुभिर् उन्मत्त जड़ बदिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्ठित वेतनत वा याञ्छया त्रच्छया वा उपसादितम् अल्पं बहु उपसादितम् अल्पं बहु भ्रष्टं कदन्नं वाप्य बहरति फलं निन्द्रियप्रीति निमित्तं नित्यनिवृत्त निमित्त स्वसित विशुद्ध अनुभवानन्दं स्वात्मलाभादिकमः स्वसुखदुःखयत्वन्द्व निमित्तयोर असंभावित देहाभिमानः शीतोष्णवाद वर्षेश वृष यवाणाप्रताङ्कः पेनः संहरणाङ्गः स्तंडिल संवेसन अणुन्मर्तना मज्जन रजस महामणि इव अणुव्यक्त ब्रह्मवचस कुबड़ा व्रत कड़ी महामणि दिवा अणुव्यक्त ब्रह्मवचस कुबड़ा व्रत कड़ी रूपवीतेन ऊर्मशिना पूजादिरीति ब्रह्मबद्धरीति संते यदा अग्न्य जनाभमदो चचार यदा तु परतहारं कर्म वेतनति खमाणः स्वप्रातृभिरभि केदार कर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किन्तु न समम यशमन्यूनम अधिकम इति वेत कणपिन्याः कणपिन्याः फलीकरण कुलमशस्थाली पुरुषादीनि अमृतवत्तप्यवहरति अद कदाचित् कश्चित् प्रशर्बधिरपत्रकाल्यः पुरुष पशुमालबदा अपत्यकामः दस्यः बदैव मुक्तस्य पशुपतिभिं तदनुचराः परिधावन्तो निषिद्धसमये तमसा आवृतायाम् अनधिगतपशव आकस्मिकेन इतना केदारान् वैरासनेन मृग वाराहादिभ्यः संरक्षमाणम् अंगिर प्रबलसुतम अवस्यन् अदुदयेन अणवत्य लक्षणम् अपमृश्य भर्तृकर्म निष्पत्तिम् अन्यमाना पत्वरशनैः चन्दिका गृहम् उपनिन्द्युर्मुदा विकसितवतन अदपणयस्तम स्वविधिना अभिषिच्य हदेन वाससा आचात्यः पोषण लेभ शक्य तिलकादिभिर् उपस्कृतम भक्तवन्तं दोपदीप माल्य राज किसलया अंगुर फलोपहारोपेतया वैशस संस्थया महता गीतस्तुति मृतंग पण मघोषेण च पुरुषवसम भद्रकाल्याः परद उपवेशयामसः अद वृषराजपणिः पुरुषपसुर असुगा सेवेन देवी भद्रकाली यक्षमाणस्य तत् अभिमन्त्रितम् आसीमति अभिमन्त्रितम् यक्षमाणस्तदभिमन्त्रितम् असिम् अधिकराळ निषीदम् उपादते इति तेषाम् रजस्तम प्रकृतिनम् यक्षमाणस्तत् अभिमन्त्रितम् असिम् अधिकराळ निषीदम् उपादते इति तेषां रजस्तम प्रकृतिनम् धनमद रज उत्सिक्त मनसम भगवत् कला वीरकुलम कदत्ति कृत्योत्पदेन स्वयं विहरतम हिंसा विहारणम कर्म अधितारुणम यद् ब्रह्मबोधस्य साक्षात् ब्रह्म ऋषि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वबोध सुहृत सूणायाम् अप्याननुमदम् आलम्बनम तत्त्वोपलब्धि ब्रह्म तेजसा आदि दुर्विषहेन तन्दह्यमानने बभुषः सहसोच्चचार सैव देवी पत्रकाली वृषम अमशरो शापेश रभस विलसितम भृगुड़ी विडबे कुड़िल संस्था अरुणेक्षणाडोप अधिभयानक वदन हन्तकामे वेद महा अट्टकासम अधिसंरम्भेन विमुञ्चन्ति तत उत्पत्ति अभावीयसां दुष्टाणां देनैव असिना विवृक्न शिष्टं गलात् स्रवन्तम् असुगासवम् अत्युष्टम सकनेन निवीय अधिबाण मद विह्वल उच्चैस्तराम स्वपार्षदिः सह जघौ जनतच्च विचहारच्च शिरकन्दुकलीलया एवं एव खलु महत् अविचार अधिक्रमः काच्यन आत्मने फलति एवं एव खलु महत् अविचार अधिक्रमः काच्यन आत्मने फलति एवं एव खलु महत् अविचार अधिक्रमः काच्यन आत्मने फलति अब यद विष्णुतः महदत्पुतम यत् असंप्रमः स्वशरच्चेतन आपदिते अभिः विमुक्त देहात्यात्म आत्मभाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथिनम सर्वसत्व सुहृदात्मनाम निर्भैराणम साक्षात् भगवता अनिमिषा हरिवरायुधेन अप्रमत्तेन तैस्तै भावैः परिरक्षमाणम तत्पादमूलम् आहुतश्चियम् उपसृतानम भागवत परमहंसानां श्री हरि नमः शर्म गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद। अथ दशमोऽध्यायः श्री शुकोवाच अथ सिंधुर सवीरपदे
रघुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यस्तळे तत्कुलपतिनः शिबिकापहं पुरुषान्वेषण समये दैवगुण दैवेन उपसादितः स त्रिजवरः उपलब्ध येष देवा व्यवः संहरणागः क्वगरवत्तरम वोडम् अलमिधिः पूर्वविष्टिकगृहीतः सह गृहीतः प्रसवमाददर्शम् उवाह शिबिकां स महानुभावः यदा हि त्वजवरस्य येषु मात्रः अवलोकानुगतिर् त्वजवरस्येषु मात्र अवलोक अणुगतिर्न समाहितः पुरुष कतिस्ततः विषमगतम स्वशिबिका में रघुगण उपदार्य पुरुषान् अधिपहद आहहे वोडार सात्वतिक्रमद किमिति विषममुख्यते ज्ञानमिति अतः ईश्वरवच स्वावलम्बमुपाकर्ण्यो वाय दुर्या संगीतमनसस्तम विज्ञापयां बभूवुः न वयं नरदेव प्रपन्ता भवन् नियम अनुपदाः सात्य बहवः नियुक्त अभिन्न तदम रजतनानेन सह वयं पारयाम इति सांसर्गिको दोष एव नूनमे कस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हतीति यश्चित्तः न संयः कृपणवचो राजा रघुगणः उपासितवृत्ता अपि निसर्गेण बलात्कृतः ईशत्तुत्थितं मन्युरविस्पष्ट ब्रह्मतेजसं जातवेदसमिव रजसा आवृतमतिराह अहो कष्टं प्रादर्व्यक्तमुरु परिशान्तो दीर्घमत्वानं एक एव ऊहिवान्न सुचिरम नादिवीवान्न संहरणाङ्गो जरसा चोपत्रुतो भवान् सखेनो एवापर एते संघटन इति बहु विप्लप्तो अप्यभिज्ञया रचितं स्वचरमकलेवरे अवस्थने संस्थान विशेषे अहममित्य अनत्यारोपितं मिथ्याप्रत्ययो ब्रह्मबोधस्तुष्टिं शिबिकां पूर्वत्तु वाह आदपुनः स्वशिबिकायम यशमकदायं प्रकुपित उवाच रघुगणः किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो मां खदति कृत्य वत्रशासनम् अधिचरसि प्रमतस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिपे जनताया यदा प्रकृतिं स्वां भजिष्यसे इति एवं बह्वपत्रम् अभिभाषमाणं नरदेव अभिमानं रजसा तमसाणवित्तेन मदेन तिरस्कृताशेष भगवत् प्रियनिखेतम पंडितवर्णं स भगवान् ब्राह्मण ब्रह्मबोध सर्वबोध सुहृदात्मा योगेश्वर चर्चायां नादिद्वत्पन्न मदिमे स्मयमाण इव विगतस्मय इदमाह ब्राह्मणवाच त्वयोदितं व्यक्तम् अभिप्रलप्तं बद्धु समय स्यात् यदिवीरभारः बन्धुर्यदि स्यात् अधिगम्य मत्वः पिबेदि वासो न विदं प्रवादः स्थौल्यं कार्श्य व्याधि आदेश्य शत्रुभयं कलिरिच्छा जराच्च नित्यरादिर्मन्युरहम्मदः शुचो देहन जातस्य हिमे न सन्ति स्थौल्यं कार्श्यं व्याधि आदेश्य शत्रुभयं कलिरिच्छा जराच्च नित्यरादिर्मन्युरहम्मद शुचो देहेन जातस्य हिमे न सन्ति जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन अत्यन्तवत्यत् विकृतस्य दृष्टम स्वस्वाम्य भावो ध्रुवयित्य यत्रः तस्यच्युते असुभ व्यतिकृत्य योगः विशेषवुत्तरं मणाक्षः पश्यामि यन्न व्यवहारदो अन्यत् कैश्वरस्तत्र किं येषितव्यं तदापि राजन् करवामि किं ते उन्मत्तमत्त जडवत्त स्वसंस्थां अतस्य मे वीरः चिकित्सितेन अर्थकीयानुपपदः शिक्षितेन स्तप्तप्रमत्तस्य च पिष्टवेषः शिशुगोवाच एतावत् अनुवाद परिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवरम् उपसमस्यलः उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपणयन् राजे आणमपि तदोवाह स चापि पाण्डवेय सिन्धु सौवीरपदिस्तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक् क्षत्रिय अधिकृत अधिकारस्तृतीयग्रन्थिमोचनं त्यजवच आश्रित्यः बहुयोगग्रन्थसम्मतं पर्यावरुह्य शिरसा पादमूलमुपसृतः समापयन् नृपदेवस्मयम् उवाच हस्तनिगूढचरसिद्विजनम पिबर्षि सूत्रम कथम अवधूतः कस्यासि कुत्रते इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः नाहं विसङ्ख्य सुरराज वज्रानन्यत्रयक्षसोलान्न यमस्कि दण्डात् नाज्ञार्क स्वमानिल वित्तवस्त्राः सङ्गे पुषं वृषं ब्रह्मकुलावमाणात् तद्बृह्य सङ्गो जडवन्निगूढ विज्ञानवीर्य वचरस्य वारः वचांसि योः कृदितानि साधु न क्षमन्ते मनसा पिबेत्तमे अहं च योगेश्वरम् आत्मदत्तपितां मरणं परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्त किमिहारणं दत्त साक्षात्ज्ञान कलापदीर्णम स वै भवान् लोक निरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिङ्गो विचरत्यभिस्मित् योगेश्वराणां गतिमन्तबुद्धिः कथं विचक्षेत गृहाणपन्तः दृष्टश्रमः कर्मधात्मनो वै पर्तुर्गन्तुर्बहुदश्चाणपन्ये
यदा सदोदान यदा यनात्यभावात् यदा सदोदान यनात्यभावात् समूलयिष्टः व्यवहारमार्गः स्थाल्यक्षितावत् पयसो तत्तावदस्तण्डुल गर्भरन्तीः देहेन्द्रिय आश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसुतिः पुरुषस्य अनुरोधात् शास्ताभिगप्तः द्रुपतिः प्रजानं यज्ञकरो वै न पिनष्टिपष्टम् स्वधर्म आराधनम अच्युतस्य यदि खमानो वजहात्यगौकम तन्मे भवन्नरदेव अभिमान मदेन दच्चे कृतं सत्तमस्य प्रशिष्ट मैत्रित्रशम आत्मबन्धो यदा धरे सदवत्याणमम न विक्रियः विश्वसुहृत सगस्यः साप्रिय साम्यने वेदापि मध्यस्तवापि महत्विमानत्व स्वकृताति मात्रंग नंक्षत्यादुरातवि सोळपाणिः श्री हरे नमः शरण शरण गोपिका चरण स्मरण गोविंद गोविंद अदे एकादशत्यः ब्राह्मणवाच अहो विदको विदवादवादाने वतस्यतो नादिपितं वरिष्ठः न सूर्य हि व्यवहारमेन तत्त्वमर्शेन सह मनन्ति तदेव राजन उरुगार्कमेदं वेदान विद्योर विजृम्भितेषु न वेदपादेषु हि तत्त्वपादः प्रायेण सुतो न चकास्ति साधुः न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरवि वाच समासन् तदेव राजन उरुगार्कमेदं विधान विद्योर विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण सुतो न चकास्ति साधुः न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरवि वाच समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेति सख्यं न यस्य ह्ययानुमिदं स्वयं स्यात् यावन् मनोरजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा बाणुरुत्तम चेदभिराकुतिभिरादनोति निरङ्कुशम कुशलम चेतनं वा स वासनत्वः विषयो भरत्व गुणप्रवाहो प्रकृत षोडशत्वा विप्रतप्रदं नाम रूपनिभेद अन्तर्बहिष्वं च परिस्तनोति दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाभ्यनक्ति आलिङ्क्यमायालस्य अन्तरात्मः स्वते हिनमे संस्कृति चक्रगूढः दावान इम व्यवहारं सदाभिः शतज्ञ साक्ष्यो भगवति स्थूल सूक्ष्मः तस्मान् मनोलिङ्गमदः वदन्ति हि गुणगुणत्वस्य परापरस्य गुणरक्तम व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय निर्गुण्यमदो मनस्यात् यदा प्रदीपः कृतवतीम् अश्नन् शिखा सतमा भजति कन्यता स्वम् पदं तथा गुणकर्माणुपत्तमं प्रत्यर्मण शयदे अन्यत्र तत्त्वम् एकादशासन् मनसो हे वृत्तयाहुतिः पञ्चदियोः अभिमानः मात्राणि कर्माणि परं च तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमिः गन्धहृदयस्पर्शरसस्रवांसि निसर्गहत्याभिजल्पशिल्पः एकादशं स्वीकरणं मवेदिः संयामहं द्वादशमेक आहुः द्रव्यस्वभावासय कर्मकालैर्यकादशामि मनसो विकारः सहस्रसहस्रः कोटिश्च शतज्ञदोन्न मिदन्नस्मतस्युः शतज्ञ यदा मनसो विभूतिः जीवस्य मायारसस्य नित्यः आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च सुत्तो विचष्टे ह्यभिषिक्तकर्तुः क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिराज परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वयमायया आत्मनि अभिधीयमानः यदा निरस्तावरजङ्गमाणम् आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत् एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदम् अनुप्रविष्टः न यावदेतं तनुपुरन् नरेन्द्रः विदूयमायं वैनोदयेन विमुक्तसङ्गो विमुक्तसङ्गो जिदषट् सपत्नः यदत्वदत्वं भ्रमतीह बाधावत् न यावदेतन्मन आत्मलिङ्गम संसारदाभ पपणम जनस्य यच्चोकमोह वैरागलोभ वैराणपन्थम ममतं विदत्ते प्रातृव्यमेनम तदप्रवीर्यं विवेक्षयात्येदितम् अप्रमत्तः कुरो हरिश्चरणो वोपासनस्त्रो जहीव्यलिकं स्वयमात्ममोषम श्री हरि नमः शरण नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविन्द गोविन्द अदत्वादशद्यः रघुगण उवाच नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूपदच्चिकृत विग्रहाय नमो अवधूतत्वजपन्तुलिङ्गे निगूढ नित्यानुभवाय तुभ्यं जरामया तस्य यदा कथं सत् निदाकतस्य यदा हिमाम्बः कुदेहमाणा हि वितष्टदृष्टेर्ब्रह्मण भजस्ते अमृतम् औषधं मे तस्मात् भवन्तं मम संशयात्तं प्रक्ष्यामि पश्चात् अधुना सुबोधम् अध्यात्मयोगः कृतं तवक्तम् आख्याहि कौतूहल चेतसो मे यदा योगेश्वरः दृश्यमाणं क्रियाफलं सत्य व्यवहारमूलम् न ह्यञ्जसा तत्त्वविमर्शनार्य भवान् अमुष्मिन् ब्रह्मदे मनो मे
ब्राह्मणवाच अयं जलः नाम जलं पृथिव्यां यपात्यवः पात्यव अस्य हेतुः तस्याभिः चाङ्कुर्योरति गुल्पजङ्घः चाणूरमत्योर शिरोधरांसः अंशाधिहितार्वि शिबिका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश अस्ते यस्मिन् भवानोड निजाभिमानः राजास्मि सिन्धुष्वेति दुर्मदान्तः शौचानि मांस्त्वम् अधिकष्टदिनान् विष्ट्यः निगृह्णन् निरनुग्रहो असि जलस्य कोप्तास्मि विगतमानः न सोपसे वृत्तसमास दृष्टः यदा हृदावेव सरासरस्य पितामनिष्टं भवं च नित्यं तन्नामदान्यत् व्यवहारमूलम् निरुक्त्यतं सत् क्रियया अणुमेयम् एवं निरुक्तम् सिद्धशब्दवृत्तम् असन्निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितस्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः एवं कृशमस्थूलमणुर्बृहत्यत् असश्च सञ्जीवम् अजीवमन्यत् द्रव्य स्वभावासय कालकर्म नाम्ना अजयावेहि कृतं तृतीयम् ज्ञानं विशतं परमात्ममेकं नानन्तरं तद्बहिर्ब्रह्म सत्यं प्रत्यक् प्रशान्तं भगवत् शब्द संज्ञं यत् वासुदेवं कपयो वदन्ति रघुगणित तपसा न यादि न चैज्यया निर्भवनात् गृहात्मा न छन्दसा नैव न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः विना महत्पादरजोभिषेकं रघुगणित तपसा न यादि न चैज्यया निर्भवनात् गृहात्मा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः विना महत्पादरजोभिषेकं यतोत्तमश्लोक गुणान् वादः प्रस्तुत यदि ग्राम्य कदापि कदाह निषेव्यमाण अनुदिनं विमुक्षुः मदिं सदिं यच्छति वासुदेवे अहं पुरा परतो नाम या राजा यमुक्तदृष्ट श्रुतसङ्गपन्तः आराधनं भगवती क्षमाणं मृगापमं मृगसङ्गात् हतार्थः समं स्मृतिर्मृगदेः अपि वीर कृष्णार्चन प्रभवान् नो जहादि कृष्णार्चन प्रभवान् नो जहादि कृष्णार्चन प्रभवान् नो जहादि अदो अहम जलसङ्गातावासङ्गो विसङ्गमाणा विवृतश्चरामि तस्मान्नरासङ्ग सुसङ्ग जात ज्ञानासि नैहैव प्रवृत्तमोहः हरिं दधिहा कथनश्रुताप्यं दत्तस्मृतिर्यात्य अधिपारमत्मनः लत्तस्मृतिर्यात्यादिपारमत्मनः अधिपारमत्मनः श्री हरि नमः शरणः गोपिकास्मरण गोविंद गोविंद अथ त्रयोदश सत्यः ब्राह्मणवाच दुरत्ययात्मन्यजयः निवेशितः रजस्तमः सत्त्वविभक्तकर्मतृक् स एष सात्वहात्तपरः परिभ्रमन् मवाडविंजादिन सर्वं विन्दति यस्यामिमे नरदेव देवः दस्यभः सात्तबलं पन्ति कोणायकं बलात् होमायव यत्र हरन्ति सात्विकं प्रमत्तमाविश्य यदो रणमप्रकः प्रबोधवीरतृण गुल्मगह्वरे खडोरदंशे मसगेर उपत्रतः क्वचित् गन्धर्वपुरं प्रवस्यति क्वचित् चासुर्योल्मुगग्रहं निवासतो यत्र द्रविणात्मबुद्धिः ततस्ततो दावदिवो अडव्याम क्वचिश्चः वात्योत्थितं वांसधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलक्षः अदृश्य जिल्लिस्फट कर्णशूलः उलूकवाग्भिर्व्यदितान्तरात्मा अपुण्यवक्षणक्षयदेः सुदातितो मरीचितो यान् अवितावति क्वचित् विधोयाः सरिदः व्याधिः परस्परं चालशते निरन्तः असत्यतामं क्वचित् अग्निदाप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृदासुः सूर्यहृदस्वः क्वच निर्विण्णचेतः शोचन विमुख्यन् उभयादि कस्मलं क्वचिश्चः गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन्न मुहूर्तं चलन् क्वचित् कण्डक शर्कराङ्कुरी नहारुचक्षुर् विमणा युवास्ते पदे पदे अप्यंतर बह्निवादातितः हौडिमिघः कृत्यधिपै जनाय क्वचिन् निघ्नः अजगराहिना जनः नावेदिः किञ्चित् विपिने अपपित्तः दष्टस्मसेदेः क्वच तान्तसुगिरन्तो अन्धकोपेः पतितस्तमस्रे गर्हि स्म शित्रोत्रसरान् विचिन्वंस तन्मक्षिकाभिर्व्यदितो विमानः तत्राधिगच्छात् प्रतिलप्तमानः बलात् विलुम्पन्त्यदं तं ततो हन्ये क्वचिच्च सीतातप पादवर्ष प्रतिक्रियां कर्तमानि शास्ते क्वचिन् मितो विपणन् यश्च किञ्चित् वित्तसमृच्यत्युत वित्तशाट्यात् क्वचित् श्रेणधनस्थो तस्मिन् शय्यासनस्थान् विहारहीनः यासन् परात् अप्रतिलप्तकामः पारक्यदृष्टि लभते अपमानम् अन्योन्यवित्तव्यतिसङ्गवृत्त वैराणपन्तो विवहन्मितश्च आत्मन्यमस्मिन् वरु कृच्छवित्त वादोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः तावसान् विपन्नान् स हि तत्रतः विहाय जातम् परिगृह्य सात्तः आवदत्यपि न कश्चित् तत्र वीरात्मनः पारमवैति योगम मनस्विना निर्जित दिग्गजयन्त्र ममेदि सर्वे भवे बद्धवैराः
हृदय शयन तत्प्रजन्ति यनस्तदन्धः कालभैरव अभियादि असज्जति क्वापि तदा पुजाश्रयस्तदाश्रयात् तदाश्रया व्यक्त पदत्वचस्पृहः स्पृहः क्वचित् कदाचित् हरिचक्रदस्तत्र सन् सख्यं विदते बहकङ्ककृतैः तैर्वञ्चतो हंसकुलं समावेशन् नरोचयन् शीलमुपैति माणान् तच्चातिरासेन सुनिर्वृतेन तयः परस्परत्वीक्षणं विस्मृतावधिः रमेशरं शन सदारवत्सलो व्यवायदेनो व्यवशः स्पपन्तने क्वचित् प्रमादात् गिरिकन्तरे पतन् बल्यं गृहीत्वा गजभेद आस्थितः अथ कथञ्चित् स विमुक्तापदः पुनश्च सार्थम प्रविशत्यरिन्दम आत्मन्यमस्मिन् अजयः निवेशितः भ्रमञ्चनो अत्याभिन्न वेद कश्चन रघुगणतत्त्वमपि ह्यत्मनो हास्य संन्यस्तदण्ड कृतबोधमैत्रः असज्जितात्मा हरिसेवया सिद्धं ज्ञानासि मादाय तरादिवारम अजवच अहो तो जन्म अखिल जन्म स्वपर्णं किं जन्म व्यस्तापरेऽप्यमुष्मिन् न यत् ऋषिकेश यशः कथात्मनाम महात्मनं व प्रचुरः समागमः न ह्यत्पदं तच्चरणाम्बुजे रेणुर्हदां हसो भक्तिरधोक्षजे अमला मुहूर्तिकात्यस्य समागमाश्च इमे दुस्तर्कमूलो अवहदो अविवेकः नमो महत्यास्तु नमः शिशुभ्यः नमो युवभ्य नमः आवरुभ्यः ये ब्राह्मण गाम अवधूतलिङ्गा चरन्ति तेभ्य शुभमस्तु इत्येवम् उत्तरामातः सवे ब्रह्मर्षि सुतः सिन्धुपदय आत्मसतत्वं विगणयतः पराणभावः परमकारुणिक दयो उपादिश्य रघुगणेन सगर्णम् अभिवन्तितचरण आपूर्णार्णव इव निवृत करुणं याशयो तरणिमिमां चचार सवीरपतिरभिः सुजन समवगतं परमात्मसतत्व आत्मन्यभित्यारोपितामच्च देहात्मपदिम सज्ज एवं हेतुः भगवदाश्रितानुभावः राजवाच यो हवा इह बहुविधा महाबाहवद तया अभिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोक भवात्मा स ह्यादिमनीषया कल्पितविषयो न अंजसा व्युत्पन्न लोकसमधिकमः अधः तदेवैदत् द्रवगमं तदेवैदत् द्रवगमं समवेदानुकल्पेन निर्दृश्यतामिति श्री हरे नमः शरण अभिकार्यण स्मरण गोविंद गोविंद अध चतुर्दशत्ययः सहोवाच येष देहात्ममानिनम सत्त्वादिगुणं विशेष विकल्पित कुशल समवहार निर्मित विविध देहावलिभिर् वियोग संयोगात्यनादि संसारानुपपस्य द्वारपोतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गात्मपद सुगमे दुर्गात्मपत् असुगमे आत्मन्यावदित ईश्वरस्य भगवत विष्णुर्वसवत्यन्यः माया जैवलोको अयम यदः वणिके सार्थहस्तपरः स्पदेः निष्पादित कर्माणुभवः श्मशानवत् अशितपमायां संसाराडव्यम गतो नात्यापि विपुल बहु प्रतियोगे हस्ततावोप समणि में हरिगुरु चरणारविंदम मधुकर अणुपदवी आवरन्ते यस्यामः येदेह षडिन्द्रियनामाणः कर्मणः तस्य येदवते तत्यदवर्षस्य तनं यत् किञ्चित् धर्मोपैकं बहुकृष्याधिगतम साक्षात् परमपुरुष आराधनं रक्षणं यो असौ धर्मस्तमद्दु सामराय उदाहरन्ते तद्धर्म्यं धर्म दर्शनं स्पर्शनं श्रवणस्वादन अवक्राण संकल्प व्यवसाय गृहग्राम्य भोगेन गुणादस्य अजितात्मनो यदा सात्रस्य विलुम्पन्ते अदशयत्र कौडुम्बिका तारापत्यादिको नाम्ना कर्मणः विकसकाला एवानिच्यतो अभि कदर्त्यस्य कौडुम्बिन वर्णकवत् संरक्ष्यमाणं यशदा अभिः हरन्ति
यदा क्षणवत्सरं कृष्यमाणम् आप्यादत्त बीजं क्षेत्रं पुनरेवापनं काले गोल्मत्रण वीरद्भिर् कः परं विपः भवत्येवमेव प्रशासनः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् न हि कर्माणि उत्सीदन्ति यदयं कामखण्ड एव आपसतः तत्र कदो दंसमसगं समाबसदैर्मणिजिः सलभ सगन्तस्तस्करमूषकादिभिः बवरुद्यमानं वहि प्राण क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन् अत्वन्याविद्या कामकर्म विपरक्त मनसा अणुपन्नर्थम् अरुणघं गन्धर्वनखरम् उपपन्नम् इति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति तत्र च क्वचिदादबोधक निपाणे ऋषि अणुपदो अधिपाणुभोजन व्यवसाय व्यसनोपः ऋषियानुपदापति बाणभोजन व्यवायादि व्यसनोपः क्वचिच्च शेषदोषनिषतनम् पुरुषविशेषम तत्वर्णगुणं निर्मितमधिः सुवर्णम् उपादित्य सत्यग्नि काम आदर इवोन्मुख पिशाचम् अधकथाचिन्निवासमान पाणीय द्रविणात्यनेकात्मोपजीवना अभिनिवेश एतस्यां संसारलभ्याम् एतस्ततः परितापति क्वचितः वात्योपयम् अवम्यया प्रमदया आरोहमारोपितस्तत्कालं रजसा रजनीबोध इव साधुमाधवज्ञातो रजस्वलाक्षो अभिदिग्देवता आदिरजस्फलमदिर्न विजानाति क्वचित् सकृत अवगतं ऋषयवैदित्य स्वयं पराविद्यानः विभ्रंसितं स्मृतिस्तयैव मरीचिदोय प्रायं स्थाने अभिधावति क्वचित् पुलक जलस्फणवत् आदिपरुषरपसाडोपम् प्रत्यक्षं परोक्षं वः त्रिपुराजकुलनिर्वसितेन अधिव्यधितकरुणमूलहृदयः स यदा भक्तपूर्वसुगतस्तथा कारस्करः काकदण्डात्यपुण्यत्रमलदा विशोदपाणवत् उभयार्थशून्य द्रवणान् जीवमृतान् स्वयं जीवन म्रियमाण उपधावति एकदा सत् प्रसंगान् निकटमदिर् युतकशोधः स्करणवद् अवयदापि हेतुकदम पाखण्डम अभियावधि यदतः परपादयान्त आत्मनः नवलभते तदा हि पितृपुत्र परिष्मदः पितृपुत्राणवास खलु पक्षयति क्वचिदासाद्य गृहमदावत् प्रियात् पितरम् असुवदर्कम लोकस्वकाक्रेण दह्यमानः वृषम निर्वेदमुपगच्छति क्वचित् कालविविशमिति राजकुलरक्षसापहृत प्रियम् अदना प्रियतमदनासु प्रमृदक इव विगतजीवलक्षण अस्ते कदाचिन् मणरुदोपगतं पितृपितामहात् पितामहात् यत् असत् सत्तिति स्वप्ननिवृत्ति लक्षणम् अनुभवति क्वचित् गृहाश्रम कर्म चोदन अधिपरं गिरिमारुक्षमाणः लोकव्यसनकर्षितमनः कण्डक शर्करा क्षेत्रं प्रविशन्निव सीदति क्वचित् दुत्सहेन कायाप्यन्तरवह्निना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय कृत्यति स एव पुनर्निद्रा अजगर गृहीतो अन्ते तमसि मग्नः शून्यारण्य इव सेते नान्यत् किञ्चन वेद सव इवापवित्तः कदाचित् मग्न मानदंष्टो दुर्जनः तन्दशोकैरलप्त नित्राक्षणो वेदश्रुतियेन अनुक्षीयमाण विज्ञानानन्दकोपि अंधवत् वदति कर्हिस्म चित्ते कामं मदलवान्
विचिन्वन् यदा परदार परद्रव्यान् अवरन्तानो अज्ञा स्वामी निखित पदत्यभारे नरिये आदच्छ तस्मत् उपयतापि हि कर्मास्मिन् आत्मनः संसार भवनम् उपदाहरन्ति मुक्तसदो यदि हि बन्धत्येव ततः उपाचिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्रः इत्यनवस्थितिः वशिष्ठः सीतपादात्यनेकादि दैविकबौद्धिकात्मीयानां दशानां यदि निवारणे अकल्पः निरन्तरचिन्तकः प्रसन्नः स्थिः क्वचिन्विदो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमन्येभ्यो वा काकिनी कामात्रम् अभ्यापहरन् यत्किञ्चित् वित्तसमेधि वित्तसाध्यात् आत्मन्यमुष्मिनिम उपसर्गास्तदा सुखदुःखरागद्वेष भयाभिमान प्रमोद उन्माद शोक लोभ मात्सर्य ईर्ष्य अवमान पिपासा अधिव्याधि जन्मजरा मरणादयः क्वापि देवमायया श्रिया वो जड़दोपकूढ़ है तस्कन्न विवेक विज्ञानो यद्विहार गृहारंबाकुल हृदय तदाशयापसक्त सुदहितृ खड़त्रावाशिदावलोक विचेष्टिता अवहृद हृदय आत्मानं अजितात्मा बारे अन्ते तमसि प्रहिनोति कदाचित् ईश्वरस्य भगवतः विष्णुचक्रात् परमाणुवादी परात्तः अपवर्ग कालो उपलक्षणात् परिवर्तितेन वैसारं हसारहृदः अब्रह्मतृण आत्मतृण तम्बादिनम बोधानम अनिमिषतः विशतम वित्रस्त हृदयस्तमेव ईश्वरम कालचक्रजायुधम साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अनाथत्य पाखंड देवता कंगकृत भग वडप्राय आर्य समयम यदा पाखंडिभिर आत्मवंचितैस्तैरुरु वंचितो ब्रह्मफलम समव संस्थे सम शीलम उपनयन आशिद शीलम उपनयनादि सौदस्मार्थ कर्मानुष्ठानेन अवगर्भानुष्ठानेन कदाचित् ईश्वरस्य भगवतः विष्णुचक्रात् परमाणुवादित्य परात्ता अपवर्ग कालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वैसारं हसहृदः ब्रह्मतृणस्तम्बादिनां बोधानाम् अनिमिषतं हृदयस्थं इव ईश्वरं कालचक्राणि जायतम साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अनाथत्य पाखण्डदेवताः पंगकत्र भगवडप्राय आर्य समय परिहृताः सांगत्येन अविदत्ते यदा पाखण्डिभिर आत्मवंचितैस्तैरुरु वंचितो ब्रह्मकुलं समाव संस्थेषां शीलम् उपनयनादि सौदस्मात् कर्मानुष्ठानेन भगवदयज्ञपुरुषस्य आराधनमेव तदारोचयन् श्रोत्रकलं वजते निगमाचार्य असुत्थितो यस्य मिथुनी बाबा कुटुम्बवर्णं यदा वाणरजातेः तत्रापि निरपपुरोत स्वैरेण विहरन् अधिकृपणबुद्धि अन्योन्यमुखनिरीक्षणादिनः ग्राम्यकर्मणैव यस्पदकालापतिः क्वचित्रम वदैहिक कार्येषु क्वचित्रमवदैहिकार्थेषु दैहिकार्थेषु क्वचित्रमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन् यदा वानरः सुधारावत्सलो व्यवाय क्षणः एवम् आत्मन्यवरन्तानो प्रत्यगच भयात् तमसि
मृत्युगज भयात्तमसि गिरिगंधर प्राये क्वचिच्चेदवादात्यनेक दैविक भौतिक आत्मीयानम दुःखानं प्रति निवारणे अल्पहोतिरन्त विषय विषण्ण आस्ते क्वचिन् मितः व्यवहरन् यत्किञ्चिदनमुपयाति वित्तशास्त्रेण क्वचिक्षेण धनः सय्यासनासनात्योपभोग विहीनो यावत् प्रतिरप्तस्मणोरतो उपकदातानि अवसितं मदेस्ततस्तत अवमानादीनि जनात् विलपते एवं वित्तव्यतिसंग विवृत्त वैरणबन्ताभिः पूर्ववासनया यदा उत्पहत्यता अववहति एतस्मिन् संसारात्मनि नानाक्लेशो उपसर्गबाधित आवन्न विभिन्न यत्र यस्तम् ऊह भावेतरस्तत्र तस्य जातमुपादाय शोषन्मुख्यन् विपत्पिबदन् रन्तन संहृष्यन् कायन्नाह्यमाणः साधुर्वर्जितः नैवावर्तते अत्याभिगत आरब्ध येष अरलोकसात्तो यमत्फलः पारमुपति सन्ति यदिदं योगानुशासनमन्नवा यदिदं योगानुशासनमन्नवा एतत् अपरं ततेः यन्यस्तदण्डः मुनयः उपशमशीला उपरदात्मानः समुपगच्छन्ति यत्तपि दिक्पचयिनो यज्वनवये वै राजशक्यं तु परेम मृते सैरन्नस्याम्येव ममेयमिति यद्वैरणपन्थायां विसृज्य स्वयम् उपसंहृताः कर्मवल्लीमवलम्ब्य तदा आवदः कथञ्चन नरकात् विमुक्तः संसारात्मनि वर्तमानो नरलोकसात्त्वमुपयाति एवम् उपरि कदोऽपि दास्यमुपकायन्ति आशपस्यः राजर्षिर्मनसापि महात्मनः नाणुमत्मार्हति नृपोमाक्षिकेव वरुत्मतः सुहृत्राजम हृदय स्पृशः जहो युवैव मणवत्त उत्तम श्लोकलालसः योदश्चरण श्रुति सुतस्पजनात् दारण्य पात्यं श्रियं सुरपरिः सदयावलोकन् चंद्रवस्तत्वचिदं महता मदत्विट् सेवाण रक्त मनसाम अबुब पल्कुः यज्ञाय धर्मपदीय विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशरसे प्रगतीश्वराय नारायणाय हरये नमः युच्युतारम् हास्यं मृगत्वमपि यः सम्भूता जहार यज्ञाय धर्मपदीय विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशरसे प्रगतीश्वराय नारायणाय हरये नमः युच्युतारम् हास्यं मृगत्वमपि यः सम्भूता जहार यज्ञाय धर्मपदीय विधिनैपुणाय से प्रगतीश्वराय नारायणाय हरये नमः युच्युतारम् हास्यं मृगत्वम् अभि यः समुदा जहार यज्ञाय धर्मपदीय विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशरसे प्रगतीश्वराय नारायणाय हरये नमः युच्युतारम् हास्यं मृगत्वम् अभि यः समुदा जहार एदं भागवत सभाजिता अवतात गुणकर्मणः राजर्षिर्पदस्यानुच्छेदम् यशस्यम स्वर्गम् आभवर्गम् एदं भागवत सभाजिता अवतातं गुणकर्मणः राजर्षिर्पदस्यानुच्छेदम् स्वस्त्यैनम् आयुष्यम् धन्यम् यशस्यम् स्वर्ग आभवर्गम् वा अनुशृणोति आख्यास्यात्यपि नन्दति च सर्वा येवाशिष आत्मनः आशस्ते न कांचन परदेति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमसिद्धान्ते पंचमस्कन्धे भगवद्वाक्यानि पारोक्ष्य वर्णनं नाम चतुर्दशाध्यायः अथ पंचदशाध्यायः श्रीशुकोवाच भरतसात्मजः सुमतिर् नाम अभिहितो यमः श्रीशुकोवाच भरतसात्मजः सुमतिर् नाम अभिहितो यमः भाव केशपाखण्डिन ऋषभपदवीम् अणवर्तमानं चाणाद्य अवेद समां नादम देवतम स्वमनीषया भाविकस्य
कालो कल्पयन्ति श्री हरि नमः शरण 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 नमः गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मह्यमैषः कोपरामपि समस्त नित्यं लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावतः करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि इत्ताड 2வது பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது பூர்த்தி வைபவ சிதபதே ராம 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 ராம் ராம 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 நடுவில் கொஞ்சம் விட்டுச்சு மறுபடியும் இப்போ பாராயணம் பண்ணி அந்த தொடர்ச்சி முடிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பாராயணம் பண்ணுறோம். ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாம் சீதாராமனுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். சிதபதி ராம 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 ஸ்ரீராம ராம 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 ராம் ராம 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 ஸ்ரீராம சீக்கிரம் की जय जय जानिकांत स्वामी जय जय राम 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 श्रीमद् भागवत भगवान की जय सर्व साधु की जय अंशुल स्वामी की जय राम 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 श्रीमद् भागवत भगवान की जय अंशुल स्वामी की जय राम 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 இத்தோட 2வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது. பரதேவ சரித்திரத்தோட மேல உள்ள சரித்திரங்களை நாளைக்கு பார்க்கலாம், அப்புறம் பார்க்கலாம். சரி. ராம 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 श्रीमद् भागवत भगवान की जय अंशुल स्वामी की जय सर्व साधु की जय अंशुल स्वामी की जय राम 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 राम